हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द डिफरेंट साउंड ऑफ ई। अगर किसी वर्ड में आप ई देखते हो, आप ई तो पढ़ लेते ही हो कि भाई सिंगल लेटर आप तो पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट, बट इन द कॉम्बिनेशन मोड you feel very some type of trouble, like double e, so on. So today I am telling you that in words, how can we read aloud? It means to say that what is the phonetics, what is the different sound of the sound e in words. So come here, we can see that in some word like pet, dead, bet, head, these type of words. If you see this type of word, if you see e between them, then you read pet, dead, bet, hat, met, and so on. It means to say short a, short a, the sound of short a. And the next is sometimes you see, आप देखते हो कि कभी कभी कि जो ये साउंड तो डबल ही होता है, इन सम वर्ड्स देयर मीन डबल ही, लाइक वीक, वीक, नीट, सीक, सीक, वीक, पीक, नीट, सीक, द लॉन्ग साउंड ऑफ ई, e, weak, and some other the combination of e, there are e and a, like neat, peak, read, seek, so on. Such type of words you can see and you can read, like e, neat, peak, read, weak, seek, sorry. And you can sometimes you can see that long with long e, like double e, like b, c, such type of. With the help of e we can make different sound like that, b double e, b, s double e, c. Sometimes in some other words we can see that the sound of e, like a sound, like mother, mother, father, other. आप देख सकते हैं, you can see that there are different sound, some other different sound of e, like the sound of mother, father, other. And sometimes we can see that the sound of e, like b sound. So that's all. I think with the help of these words, it makes very easy to read any words in your book. So please keep attention upon these words, and the different sound of e with the combination have different sound. इसको आप करते करते क्या है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़िए और साथ में अपने बुक में भी मैच कीजिए. जब तक आप इसको मैच करके पढ़ेंगे नहीं, फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे. आपको फिर दिक्कत होगा. ये नहीं कि आप लिख लिए फिर इसको रख दिए, रखना नहीं, उसको प्रैक्टिस करते रहना है. और साथ में इसके फोनेटिक्स, फोनेटिक मीन्स द साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड लेटर विद द कॉम्बिनेशन. आपको फोनेटिक्स आनी चाहिए. विदाउट फोनेटिक्स आप नहीं पढ़ सकते हो. अगर आप फोनेटिक्स नहीं जानते हो तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हो. तो इंग्लिश को आसान करने के लिए, ताकि आप इंग्लिश बोल सकें, इसके लिए आप फोनेटिक्स को ध्यान देते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको नेक्स्ट फॉर्मल लेटर का साउंड बताऊंगा. पिछली वीडियो में द साउंड ऑफ ए बता चुका हूँ. उसके बारे में आपको डिटेल में चैनल में मिल जाएगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं. ओके सर, थैंक यू.